So these are the three concepts which I am going to discuss. What are called functional alternatives, what is called functional equivalence, and what is called functional substitutes. आर के मर्टन का जो प्रकारात्मक विश्लेषण का एक कोडिफिकेशन को उन्होंने प्रस्तुत किया है, इस कोडिफिकेशन के तहत उन्होंने तीन प्रकार की पोस्टुलेट्स या हम कह सकते हैं तीन प्रकार के सैद्धांतिक रूपरेखा को प्रस्तुत किया है। पहली सैद्धांतिक रूपरेखा को हम ये कह सकते हैं कि समाज के प्रकारात्मक एकता। तो समाज की प्रकारात्मक एकता क्या है कि उनका ये कहना है कि समाज की या समाज को हम एक बायोलॉजिकल एनालॉजी के रूप में देखते हैं या एक सावयवी जैविक या एक प्राणी जिस प्रकार जिसका जीव है या जीवन है, तो वो उस आधार पर देखते हैं और वो इंटीग्रेटेडली एकत्रित होकर पूरी प्रकार करते हैं। या जैसे कि आप मानव शरीर के एग्जाम्पल ले लें कि मानव शरीर का तरह तरह की अंग है और ये तरह तरह की अंग जो है एक प्रकारात्मक रूप से एक दूसरे के साथ एकीकृत होता है, तो फिर मानव शरीर का निर्माण होता है, मानव शरीर प्रकारात्मक रूप धारण करता है। तो ठीक इसी प्रकार की समाज का भी एक बायोलॉजिकल रूप है, समाज का भी एक सावयवी ढांचा है और ये सावयवी ढांचा को वो कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो प्रकारात्मक ग्रुप करता है। मतलब कि इट कंट्रीब्यूट्स, खास करके वो ये आर्गुमेंट रैडक्लिफ ब्राउन की जो विचार है उस विचार से लेते हैं और इसे कहते हैं कि जो कल्चरल सोशल सिस्टम्स हैं या कल्चरल सिस्टम्स हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं प्रकारात्मक एकता के लिए। परंतु आर के मर्टन इस बातों से सहमत नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रकार की जो असम्पशंस हैं, इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार की जो इंटरप्रिटेशन है, इस प्रकार की जो विश्लेषण है, सो इस विश्लेषण को वो एनालिसिस करते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। और एनालिसिस करते हुए, आलोचना करते हुए कहते हैं कि कल्चरल जो आइटम्स है वो हर समय एक जैसे प्रकारात्मक भूमिका अदा नहीं करता है और हर समुदाय के लिए एक जैसे प्रकारात्मक भूमिका अदा नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप किसी भी जैसे जाति व्यवस्था की मैंने उदाहरण दिया कि जाति व्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करेंगे, वो किसी समुदाय के लिए प्रकारात्मक हो सकता है, किसी समुदाय के लिए प्रकारात्मक नहीं हो सकता है। तो अब ये हमेशा समाज में एकीकरण नहीं लाता है, ये समाज में बिखराव भी पैदा करता है, झगड़ा भी पैदा करता है। इसी प्रकार की रिलीजन को भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार की तमाम जो सामाजिक एस्पेक्ट्स हैं वो सबको लेने से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एकीकरण नहीं लाता है और हम ये कह सकते हैं कि कभी ये एकीकरण लाता है, कभी नहीं लाता है। तो इसीलिए इसकी प्रकारात्मक जो विश्लेषण है या इसकी जो सकारात्मक पहलू है, इसको हमें देखने की आवश्यकता है और इसके नकारात्मक पहलू को भी देखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ सोसाइटी है, इसका वो खारिज करते हुए कहता है कि समाज शास्त्रियों की ये भूमिका है कि कौन सी फंक्शन, कौन सी संस्थाएं, कौन सी ऐसे सामाजिक व्यवस्थाएं जो समाज के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करता है और जो कुछ समाज के लिए नकारात्मक भूमिका अदा करता है, कब और कैसे ये सकारात्मक भूमिका अदा करता है, कब और कैसे ये नकारात्मक भूमिका अदा करता है, ये हमें समझना होगा और इसको रेखांकित करना होगा कि कौन सी संस्थाएं या कौन सी संस्थागत जो विशेषताएं हैं वो सकारात्मक है और कौन सी नकारात्मक है। ये पहली आलोचना के साथ साथ ये सुझाव आर के मर्टन देता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, कि कोई भी समाज की जो स्टैंडर्डाइज सोशल कल्चरल फॉर्म्स है वो किसी ना किसी प्रकार की एक प्रकार की वैश्विक या हम कह सकते हैं सार्वभौमिक से एक सार्वभौमिक प्रकारात्मक रूप अदा करता है, जिसका वो बाद में खंडन करता है। खास करके मैलिनोस्की की जो विचार है, तो उस मैलिनोस्की विचार को लेते हुए वो इस चीज के कहते हैं कि हर संस्था हर समय जो है प्रकारात्मक भूमिकाएं अदा नहीं करते। जैसे कि मैंने जाति व्यवस्था के उदाहरण दिया, इसी प्रकार की आप और भी उदाहरण देख सकते हैं कि जो डेलिबरेटली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था को हमने जानबूझकर बनाया है, जैसे कि हमने यूनिवर्सिटी बनाया है,
तो यूनिवर्सिटी को इसलिए बनाया गया कि बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ाई करेंगे, अपनी कैरियर बनाएंगे। परंतु कभी कभी क्या होता है कि यही बच्चे जो है प्रोटेस्ट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो तरह तरह की समाज की समाज की जो नीतियां हैं या सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर भी कभी कभी इसके अपोज करते हैं। तो इसीलिए आर के मर्टन का कहना है कि ये एक सार्वभौमिक प्रकारात्मक रूप अदा करे कोई भी संस्था, कोई भी सांस्कृतिक इकाई, यह हमेशा सही नहीं है। इसीलिए वो कहता है, इसीलिए वो सजेस्ट करता है ये सोशल कस्टम दैट हैज पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जो ऐसे संस्थाएं जिसका सकारात्मक परिणाम होता है या जो सकारात्मक परिणाम को दर्शाता है, वो किसी एलिट वर्ग के लिए सकारात्मक हो सकता है या किसी समुदाय के लिए सकारात्मक नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कह देंगे कि फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म या यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म ये बातें सही नहीं है, क्योंकि ये किसी समुदाय के लिए, किसी खास वर्ग के लिए ये प्रकारात्मक हो सकता है, कुछ वर्ग के लिए प्रकारात्मक नहीं हो सकता है। तो यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की कॉन्सेप्ट कहना गलत है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो कहते हैं वो पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी, कि किसी संस्था का, किसी सांस्कृतिक इकाई का अपरिहार्यता नहीं है। परंतु जो फंक्शनलिस्ट लाइक मालिनोस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, इवन टू सम एक्सटेंट पार्सन्स, वो पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी मतलब यह है किसी संस्था का, किसी सांस्कृतिक इकाई का, किसी सांस्कृतिक ट्रेट का जो अपरिहार्यता है, अपरिहार्यता मतलब होना अनिवार्य है। तो ये सांस्कृतिक अपरिहार्यता, सांस्कृतिक अनिवार्यता पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाता है, और वो कहता है कि कभी कभी कोई चीजें प्रकारात्मक रूप लेता है, कभी कभी कोई चीजें प्रकारात्मक रूप नहीं लेता है, या किसी समुदाय के लिए प्रकारात्मक है, किसी समुदाय के लिए नकारात्मक है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया, जाति व्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो आपको जरूर लगेगा कि ये एक कुछ खास वर्ग के लिए जो कि जाति व्यवस्था के पोषक हैं, उनको ये जाति व्यवस्था की सकारात्मक पहलू देखने को मिलेगा। परंतु अगर किसी आप जो इसके सफरर है और उस समुदाय से बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था की आलोचना करेंगे। तो इसीलिए पोस्टुलेट ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी भी बातें सही नहीं है। इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि हमें फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स, प्रकारात्मक विकल्प की तरफ आगे बढ़नी होगी, और प्रकारात्मक की इक्विवेलेंस मतलब एक जैसे कि प्रकारात्मक इक्विवेलेंस मतलब उसकी बराबर की कुछ संस्थाएं ऐसे हैं जो वो संस्था कार्य करता था उसकी दूसरी संस्था कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, परिवार के संदर्भ में अगर बात करें क्रेज, या हम उसकी बात करें कि ओल्ड एज होम्स, तो ये परिवार की इक्विवेलेंट संस्थाओं का निर्माण करता है समय के क्रम में। और थर्ड पॉइंट को कहते हैं फंक्शनल सब्स्टिट्यूट्स, कि क्या इसके विकल्प हो सकता है। ऑल्टरनेटिव्स और सब्स्टिट्यूट लगभग एक ही शब्द है, पर फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स विकल्प और सब्स्टिट्यूट मतलब उसके बदले में, ठीक है, क्या प्रकारात्मक इसके बदले में क्या और संस्थाओं का निर्माण हो सकता है। तो तीन मुख्य बातें आर के मर्टन करते हैं, जिसको हम फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स, फंक्शनल इक्विवेलेंस एंड फंक्शनल सब्स्टिट्यूट कहते हैं। इसी को ध्यान रखते हुए वो प्रकारात्मक विश्लेषण की एक कोडिफिकेशन को प्रस्तुत करता है। What are these codifications of functional analysis? The first point he suggests that any society, functional analysis begins with the selection of a standardized social and cultural items whose functions are supposed to be studied. What does it mean? What he's saying, functional analysis begins, how the functional analysis starts. It begins with the standardization of social and cultural items. What is called the standardization of social and cultural items, which functions are need to be studied? You know, if you look at Parsons, and there is a concept which is given by Parsons called pattern variables. So now you have to understand what is called pattern.
And pattern means a repetitive kind of situation out of which the social and cultural items exhibit their function. That means a repetitive nature of activities which is being done by the people in society that leads towards pattern building. For example, take the example of religion, take the example of marriage, take the example of economy. You will find this repetitive patterns exist in society and they exhibit their functions, and as a functionalist it is our first duty to look at these patterns. So the functional analysis begins. How does this functional analysis begins? The functional analysis begins by looking at the standardized practices. And how does this standardized practices is repetitive and it develops a pattern and it works to exhibit a kind of function. Look at agriculture. There is a agriculture cycle. If you are interested to study agriculture patterns, so you have to study the agriculture cycle. How does the cycle operates throughout the year? And it is a patterns. It is a repetitive work which all our agriculture or people engaged in agriculture activities they do. Of course, nowadays because of the introduction of AI, because of introduction of science and technology, because of so many geographical innovations or geographical scientific innovations which is interested or which has tries to predict about the weather conditions, weather patterns and natural calamities. All that thing has helped the agriculture system or the agriculture cycle to exhibit a kind of functions by keeping all these innovations in this particular field. So this is also a kind of patterns. This is also repetitive. It also exhibits a functions. And what is our duty as a functionalist? To see that how does it operates. This is the first point. Second codification, what is trying to say, functional analysis generally involves references to subjective dispositions such as motives, purposes of individuals involved in the social system. Second one is called subjective dispositions. What is called the subjective dispositions? The subjective dispositions means when you do this functional analysis, you are supposed to look at the subjective aspect involved with individuals. So therefore, what he is trying to say, functional analysis has to be located in two contexts. One is called subjective dispositions, the other one is called objective consequences. Subjective dispositions and objective consequences. So you have to locate these two, subjective dispositions and objective consequences. What is called subjective dispositions and what is called objective consequences? The subjective dispositions such as your motives and purposes, the individual work. So you are, suppose with this bad weather also you have come to attend this class. So this is called a subjective dispositions. That means you feel that this is an important class wherein your presence is required to make you more, you can understand sociology a little bit better. So therefore, this is a subjective dispositions on the basis of which you are motivated to come to this particular class with bad weather and you have a very clear-cut purpose in your mind. The subjective dispositions are motivational and it motivates the individual to work in a particular manner to attain a particular purpose. You can refer to Parsons Goal Attainment, AGIL, adoption,
goal attainment, then integrations. So, but here it is called subjective dispositions according to RK model. But what are the while having these subjective dispositions and attaining your purpose, it also involves a social system which are not to be confused with the concept of objective consequences of your attitudes, beliefs and behavior. So attitude, beliefs and behavior are objective consequences. The subjective dispositions is related to motives and purpose. Subjective dispositions related to motives and purpose, whereas the objective consequences are called attitudes, beliefs and behavior. So attitudes, beliefs and behavior are objective consequences. If you are motivated to do something, this is called subjective. But it need not to be confused that it will have immediate objective consequences. For example, if you are preparing for any competitive exams, so that preparations, you need to motivate yourself and you need to have a purpose that I am preparing for this competitive exams. So this is called subjective dispositions. But what would be the objective consequences? Means your attitudes. What is your attitude towards doing that particular work? What are your belief system? What is your behavior patterns? And all these things are part of objective consequences. But at times the subjective and objective consequences are mixed. But why we are saying that mixed in the sense when you could not get into that competitive exams for that matter, then your attitudes, even the attitude of others, then your belief systems and your behavior get little shaky. So then you may think about something else. So, but what is the point he's trying to say? As a functionalist or as a student of sociology, when you try to examine things from functional point of view or by making a functional analysis, you must try to locate the subjective dispositions and objective consequences. The subjective dispositions are motives and purposes, objective consequences of attitude, beliefs and behavior. But many a times your attitude also subjective. But how does this attitude is framed? It is framed because of your motive and purposes.